guys, welcome and welcome back to my channel. This is Komal and today I'm here to make another video. This video is all about Q&A. जो क्वेश्चंस आपने मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछे, जो क्वेश्चंस आपने मुझे मेल पे पूछे होंगे, I will answer them. And to be very honest, like I was not consistent on this YouTube for a very long time because I was also doing certain things in my life, and now it's all clear. My path is clear right now. So अब मैंने सोचा है कि I would be more consistent on the YouTube and answer all your queries or your questions. So if you have any question, if you have any query, just hit me on new email address which I made recently for my YouTube comments, and I'm gonna answer all your queries, all your questions over there. It is in the description box, and I have also mentioned on the screen as well. And there is one more thing, guys. I am not a job agent जो कि कोई जॉब लगवा सकती है, या फिर कोई मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है किसी कंपनी का कि मैं आपको जॉब दिलवा सकूं. बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग मी फॉर जॉब कि हम यहाँ पर हमें जॉब चाहिए, आप हमें अभी जॉब लगवाओ. I cannot do that. All I can do is guide you how to get a job, how to crack an interview, how to apply on Indeed, LinkedIn. I have already used like these platforms for getting a job, and I never used a reference in my life for any kind of job that I am doing right now. मैंने कभी किसी के रेफरेंस से कोई जॉब नहीं ली है. टू बी ऑनेस्ट, इट्स ऑल मी एंड ऑल माई रिज्यूमे एंड एवरीथिंग. बहुत लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपना रिज्यूमे भी शेयर करा है, एंड आई विल डू दैट फॉर एनी ऑफ यू हु विल बी इन सर्च ऑफ like how my resume look likes, and as a PSW मैंने वो share करा है. So if you want to know about that resume, just DM me. I will send you the screenshot or the file as well. If you mail me, I can send you the file of my resume. All this is all that I can do for you in the current moment, because I don't own any kind of nursery, nursing home, long-term care, nothing. It's just all I can do is sharing my resume, and that I am doing right now. तो ये हो गया. एंड एक और बात मुझे करनी थी कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चंस अबाउट PSW कि उसमें जॉब मार्केट क्या है. सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने PSW नहीं किया है. आई वॉज RN बैक देन इन माई होम कंट्री इंडिया. आई वॉज एन RN. तो वहाँ पर वही एक्सपीरियंस और वही डिग्री मैंने यहाँ पर दिखा के अपनी PSW की जॉब ली थी. और यहाँ पर भी मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि even though you are an RN from India, but तुम्हें जॉब नहीं मिलती है just because you don't have any driving license. इनकी प्रायोरिटी हो चुकी है. एंड सेकेंड, वो सर्टिफिकेट्स मांगते हैं कि लाइक हमें PSW का सर्टिफिकेट चाहिए विच इज़ मैंडेटरी. एंड आई टोटली गेट दैट, बिकॉज मैंने भी जब भी वो जॉब सर्च के लिए देखा है तो ऑब्वियसली वो मांगते हैं, एंड वो कहते हैं कि लाइक वी नीड अ सर्टिफाइड, you have to have a PSW certificate, and it should be verified and certified by the state of Ontario or whatever, wherever you are applying, right? तो इसका भी एक सॉल्यूशन होता है, बिकॉज or not all kind of agencies or long term cares or retirement homes are asking for this. बहुत सारे ऐसे भी रिटायरमेंट होम्स हैं, बहुत सारे ऐसी एजेंसीज हैं जो कि नहीं मांग रही हैं, एंड नीदर दे वांट ड्राइविंग लाइसेंस, नीदर दे वांट योर दिस PSW सर्टिफिकेट्स. और मैं ये सब कुछ शेयर कहाँ करती हूँ? मैं ये सब कुछ शेयर अपने इंस्टाग्राम पे करती हूँ इन माई स्टोरीज. आई हैव ऑल्सो मेड अ हाईलाइट सेइंग कि वहाँ पर जॉब लिंक है, एंड यू कैन सी डिस्क्रिप्शन, बिकॉज मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन के साथ ही वो लिंक डालती हूँ. यू कैन सी कि वो सिर्फ इंटरनेशनल नर्सेज को ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं, एंड दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन एज अ PSW आपको चाहिए, और कोई आपको ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है. सो all you have to do is go follow me on Instagram. I will post stories, and I will post stories of job, and if I find any link, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ इन सब चीज़ों में कि मुझे देखना है कि अगर कोई लिंक, अगर मुझे ऐसा कोई जॉब मिल सके जिसमें सिर्फ इंटरनेशनल नर्सेज के लिए हो, एंड कोई ड्राइविंग लाइसेंस ना मांगा हो, या फिर कोई भी तरह का वैसा सर्टिफिकेशन ना मांगा हो, सो इट विल बी ईजी, राइट? तो मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, एंड आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड आई थिंक 3-4 स्टोरीज, 3-4 highlights in my story highlights on my Instagram as well. So go and yeah, follow me on there, and apply from there as well.
And if you have any queries, just ask me on the DM on my Explore with Nurse Instagram handle. तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से. तो पहला क्वेश्चन जो मैं पिक करने जा रही हूँ वो ये है कि it is by at real Harman. So the question was, could you please tell me if I need to complete PSW course or palliative care course to take RPN course? I am arts student. Which course will open the pathway for becoming an RPN? So he wants to become an RPN, and basically the question is asking for if there is any pathway through palliative care or PSW care, PSW sorry. तो ऑल आई नो इज, मैंने बहुत सारे ऐसे PSWs को देखा है जो कि RPN में शिफ्ट करते हैं आफ्टर 1 year. तो देयर इज अ कोर्स इन जॉर्ज ब्राउन टू विच इज जस्ट आस्किंग यू फॉर 1 year of experience in PSW, and you can get the bridging program for the RPN after getting that PSW course. तो आपको क्या करना है, बेसिकली आप PSW का कोर्स अगर करते हो, सो आफ्टर वर्किंग फॉर 1 year आप ट्राई करो कि आफ्टर 1 year आप किसी कोर्स में एनरोल हो जाओ, विच इज लाइक RPN का एक ब्रिजिंग कोर्स आता है. आई विल पुट द नेम ऑफ दैट कोर्स एज वेल. इट इज समथिंग कॉल्ड, इट इज अ ब्रिजिंग फॉर RPN थ्रू, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही है वो कोर्स, जिसमें आपको वो PSW से RPN का ब्रिज करने का एक तरीका है कि आप उसमें स्विच हो सकते हो. तो वो कोर्स, ये मुझे पता है कि हाँ PSW से आप RPN बन सकते हो, एंड यू कैन डू दिस through PSW course. But palliative care, I don't have any idea in this regard. और मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है कि palliative care के बाद कोई RPN का कोई pathway है, because palliative care is a specialized care in terms of treating with death, dying people. This is also a clinical course, but still it is not a pathway. It should not, it is not offering any kind of pathway for RPN, because it is not like a professional course which allow you to work as a something, right? So अगर आप PSW का कोर्स करके PSW की जॉब पोजीशन पे काम करते हो फॉर एटलीस्ट 1 year, तो उसके बाद आप RPN के लिए सोच सकते हो, एंड यू कैन हैव अ पाथवे आफ्टर दैट. दैट आई नो. So second question is, hi sister, thank you so much for information. Keep update us. I'm listening nowadays from many people in Canada, and from many websites that PSW course is free of cost nowadays. Ontario government providing whole tuition fee. Is it true? Please make clear. So no, it is not true. Like कोई भी Ontario गवर्नमेंट इसको फ्री कोर्स नहीं कर रही है. दिस इज फ्री फॉर कैनेडियन सिटीजन्स जो कि यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं, उनके लिए कोर्स फ्री है, बिकॉज आई थिंक दे ऑलरेडी, उनको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, एंड दे विल get their, for them education system is very liberal. But for us as an international student, no, it is not free, and I never heard of like anybody getting as an international student course free here in Canada. So no, it is not true. It is true for Canadian citizens. Okay, although if you have PR, so उसमें PSW की फीस थोड़ी कम है, that I know, but otherwise it is same for everybody. Yeah. Now next question is from the Rajveer Singh. Hey Komal, my story is little bit like you. I am little bit like you. I am non-medical student and opting early childhood education program of 1 year. After that, my plan is to do care assistant course, which is again for 1 year. Now my question is, like I do two programs for 1 year. Am I getting work permit? I'm getting 2 year work permit. Secondly, the usage of care assistant worker in any hospital or in person is I'm eligible for this pathway. All I'm getting from this question is that he is asking for something कि अगर 1+1 course करा है तो you will get 2 years of work permit or no. You will get 3 year of work permit क्योंकि तुमने 1+1 course करा है. So it is another thing. Or I'm not a non-medical student. For those who don't know me, I am from medical background. I have done my nursing, 2 years of experience in nursing in India, and now I got the license as well here as an RN. So yeah, I think I have answered your question. और इस क्वेश्चन का एक टेल
का भी आंसर कर देती हूँ। इसने ये लिखा है कि द यूसेज ऑफ केयर असिस्टेंट वर्कर in any hospital or in person is I'm eligible for this pathway. I think what he wants to ask is कि care assistant का कोई pathway है for PR or no? So yeah, there is a pathway for care assistant in PR. So yeah, you will get a PR pathway on the basis of your PCA. PCA is basically personal care attendant. Or yes, I'm also thinking of making a video on PCA because PCA is nowadays a new thing that is happening here. Okay, so the next question is, I'm currently a physiotherapist and I am considering taking a role as a PSW. I wanted to ask you for advice on something. Do you think combining my physiotherapist skill with PSW would allow me to earn more than typical PSWs, or I would ending up earning same as other PSWs? So I'm trying to understand if my background in the physiotherapy would be an advantage in this field, particularly in terms of pay. So here I want to answer his question. And for all those PSWs who were physiotherapists back then, तो क्या होता है कि when you are PSW, you are PSW. It doesn't matter what background you carried with yourself. Like मैं RN थी तो मुझे कोई एक्स्ट्रा अलग से पे नहीं मिलेगा. Neither for any kind of, अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो भी उसको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा. इवन कोई डॉक्टर है तो भी उसको सेम, अगर वो एज अ PSW काम कर रहा है, सो ही विल गेट द सेम पे. तो इसमें तो कोई भी PSW के रिगार्डिंग कुछ अलग से पे ग्रेड उनके लिए नहीं बना है. इट विल एंड अप, यू विल एंड अप अर्न मोर सेम एज अ PSW, आई मीन. और रही बात, इफ यू वांट टू एक्चुअली यूज योर फिजियोथेरेपिस्ट स्किल, तो या तुम यूज कर सकते हो. यू कैन एडुकेट पीपल, यू कैन ट्रेन देम वन टू वन. अगर कोई बेस्ड ऑन योर पर्सनल स्किल्स, तो आप होम केयर प्रोवाइड कर सकते हो किसी को, आप उसकी केयर प्रोवाइड कर सकते हो इफ द पर्सन इज एग्री ऑन योर previous license, because you know all the skills, you know all those things. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि Indeed पर डालते हैं, और this is also for the PSW who are looking for the job. तो ऐसे भी जॉब होती है, जैसे मैंने भी करी थी एक बार एक क्लाइंट के लिए. तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं क्लाइंट, वो ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसा जो उनको होम केयर प्रोवाइड कर दे, जो उनको घर पे आकर PSW का काम करे उनके फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स समटाइम्स. ऐसा भी होता है. और सेम होता है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी, बिकॉज जब मैं काम पे जाती थी वहाँ पर एज अ PSW, तो वहाँ पर एक फिजियोथेरेपिस्ट भी आता था. एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि ही वाज फ्रॉम फिलिपिनो, एंड he was a Filipino, sorry. And he told me like he doesn't have any PSW or physiotherapist license yet in Canada, because it is a long process. I guess he told me about the exam fees and then the protocol. It takes a lots and lots of time. So for those people, they can choose, serving an individual instead of going for another job or something. तो आप PSW का काम तो कर ही सकते हो in the meanwhile, और आप एज अ कोई ऐसा ढूंढ सकते हो जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, आई कैन प्रोवाइड माई सर्विसेज हेयर एंड द पर्सन इज एग्री ऑन बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लाइसेंस, ही इज एग्री टू टेक सर्विसेज फ्रॉम यू. सो आप ऐसा कर सकते हो. सो इट्स ऑल्सो अ थिंग हेयर. Jumps to the next question. Hi dear, I'm planning to get this course in Canada, but I'm not sure how many days in a week have to attend the classes. As the international students, we have to focus on part time as well as on the job. So can you please let me know in maximum how many days in a week we have to attend classes? If you are a PSW and you have to attend classes, if you are asking me, कोई भी काम के लिए इंडिया, मतलब सॉरी कनाडा में कोई किसी भी कोर्स के लिए, यू हैव टू मैक्सिमम अटेंड 3 to 4 days इन अ रो. आपका मोस्टली सैटरडे संडे ऑफ रहता है, एंड 5 days का जो वीक माना जाता है, वीक डेज माने जाते हैं, उनमें भी आपको सिर्फ 3 या 4 days की क्लासेस होती हैं. बहुत कम ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको पूरा 5 days बुला रहे हैं एंड उसके बाद आपको पूरा दिन क्लासेस दे रहे हैं. ऐसा नहीं होता मोस्ट केसेस में. और इफ यू टॉक अबाउट सर्टेन कॉलेजेस, आई थिंक सर्टेन कॉलेजेस हैव देयर ओन क्राइटेरिया फॉर कॉनेस्टोगा. आई कैन से होल कोर्स फॉर द PSW इज ऑनलाइन. सिर्फ एक दिन जाना होता है, दैट्स फॉर योर क्लिनिकल. तो आपको सिर्फ एक दिन जाना होता है जिसमें आप सीखने चाहते हो, बेसिकली स्किल सीखने चाहते हो कि आप PSW का काम जो करोगे उसमें आप कैसे करोगे, हाउ टू प्रोवाइड अ बेड बाथ, हाउ टू गिव केयर टू समवन,
हाउ टू केयर फॉर कैथेटर्स एंड दिस एंड दैट, तो आपको वो छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं और वही क्लिनिकल जो क्लासेस होती हैं वो आपको अटेंड करनी होती है। एंड आई थिंक वो आपको अटेंड भी करनी चाहिए, बीइंग अ नॉन मेडिकल, यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट मेडिकल थिंग, तो इट्स गुड दैट यू गो एंड प्रैक्टिस हैंड्स ऑन, अगर आप करो वहाँ पर तो इट्स गुड। So yeah, mostly 3 to 4 days, and if depend on some colleges, sometimes the PSW classes will be just for one day, and whole course will be the online. So it's up to you and up to the college as well. Next question है, uh, hi, I just graduated from computer programming in December 2023. I have no medical background. Done on med, done non-med in 12th, and then IT. Can I still obtain PSW certificate? If yes, which college online PSW course will be the best or no? Okay, so for all of those people who are non-medical and they wanted to get a medical, like this medical PSW certificate, तो आप कर सकते हो ये course. There is no restrictions in doing this course even after you have done your programming or whatever. Like some people have done cloud computing as well. मतलब बहुत सारे questions मुझे ऐसे आते हैं कि हमारा proper एक medical background नहीं था. We were in arts, we were in commerce, we were in IT, this non-med stuff. तो yes, you are eligible to do PSW course. और इसके बाद आपको PSW का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एंड ये कोर्स जो होता है बेसिकली ये ऑनलाइन भी होता है एंड ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन करना जरूरी है बिकॉज ऐसे कुछ स्किल्स होते हैं जो कि आप, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि कुछ स्किल्स होते हैं जो कि आपको जाने जरूरी है टू डू दिस ड्यूटी, टू डू दिस जॉब। बिकॉज आप एकदम से किसी हॉस्पिटल या लॉन्ग टर्म में जाकर एज अ PSW काम करोगे तो दे एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ आता है। दे विल गिव यू ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग जस्ट फॉर 1 or 2 days, वो भी किसी के अंडर, और आपको नहीं पता कि वो इंसान आपको पूरा काम तो नहीं सिखाएगा ऑफ कोर्स, वो सिर्फ आपको अपने साथ साथ लेके चलेगा और एक शैडो शिफ्ट की तरह आपको सिखाएगा कि ओके नाउ यू हैव टू डू दिस एट दिस टाइम, वी सर्व दिस टाइम, वी टेक पेशेंट्स फॉर द केयर, दिस टाइम द फूड, दिस इज द फूड टाइम, ये सब चीजें बताएगा। सो या यू हैव टू अटेंड सम ऑफलाइन क्लासेस एज वेल। डोंट थिंक कि PSW है तो मैं सिर्फ ऑनलाइन करके और मैं कोर्स का सर्टिफिकेट लेके जॉब कर लूँ, बिकॉज लेटर ऑन इट कैन बी अ बिट problematic, I would say. Do you think it is still worth studying the new changes made by still worth studying with the new changes made by IRCC to give PSW PR on arrival? What will you think those that study PSW in Canada? So PSW on arrival is a different thing, और ये सबको भी नहीं देते हैं वो। ये मैं आपको बता दूं, it's not for everybody. They have certain criteria, government pick and choose कि ओके ऐसे रैंडम ड्रॉ निकलेगा, उसमें आप अपना नाम दोगे एंड देन दे विल चूज, मे बी नॉट, मे बी यस, यू विल गेट योर PR। इट्स टोटली वेरी, इट्स अ वेरी वेग, मैं बोलूँगी कि बहुत ही मतलब ऐसा आइडिया है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस थिंग। तो yes, getting a PSW certificate or a study itself will give you a legible thing to आप वो सर्टिफिकेट लेके इस दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। इवन आप अगर आपको यहाँ PR नहीं हुई तो आप कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी वो सर्टिफिकेट से काम कर सकते हो, आप US जाकर उसका सर्टिफिकेट से काम कर सकते हो। सो डोंट थिंक कि स्टडी वेस्ट है, स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आप ये स्टडी कर रहे हो सो या इट विल पे यू ऑफ, इट विल गेट, इट्स गारंटेड एटलीस्ट, या अगर आप ये स्टडी करोगे इसके बाद आपका सर्टिफिकेट्स मिलने के बाद आपकी PR गारंटी तो है। और जो इन्होंने ये प्रोग्राम निकाला है तो यार जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम निकालती है वैसे यहाँ पे बंद भी कर देती है। सो इट्स नॉट गुड टू रिलाई ऑन जस्ट दिस थिंग और दिस whatever this is, so don't rely on this one. Okay, I think I'm almost done here with today's question, or I will answer just one more question here and then one more question and then I'm done. So if anyone on PGWP post grad for work permit can study PSW course 6 months long, or do I need to get study permit again? So to answer this questions, I highly suggest talk to an immigration agent। और अगर आपके पास नहीं है कोई ऐसा जिसको आपको बता सके, बात कर सके इस टॉपिक पे, तो I have few persons in my contact, तो मैं आपको उनका contact दे सकती हूँ। and I will also put their email address and their phone number। तो मैं आपको ऐसा नहीं दे सकती, ऐसा शेयर ओपनली नहीं कर सकते because they are also busy and it's not good to just call them anytime। बट या आई कैन गिव योर ईमेल, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के DM पे जाकर आप एक्सप्लोर विद नर्स वाले में, बिकॉज आई ओनली आंसर दोज क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन माय DMs विद एक्सप्लोर विद नर्स इंस्टाग्राम। तो मैं उस हैंडल पे आप अगर मेरे को क्वेश्चन करोगे या फिर आप मुझसे उन एजेंट्स के बारे में पूछना चाहोगे
तो मैं आपको उसका कॉन्टेक्ट और आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने में हेल्प कर सकती हूँ उनके साथ, विच इज़ फ्री। एंड आई रिक्वेस्टेड एक्चुअली कि अगर जैसे मैंने अभी पिछले टर्म्स में भी कुछ लोगों को उनसे गाइडेंस दिलवाई है एंड इट वॉज फ्री बिकॉज यू नो आई एम जस्ट सर्विंग अ कॉज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनसे इतना काम करवा रखा है कि दे ऑलवेज आस्क मी ओके कोमल, if you are referring this persons, we will not charge them for anything. It's not like, मैंने जहाँ पर भी देखा, इवन फॉर मी, जब मैं अपना ट्राई कर रही थी कि आई वॉन्ट टू गेट सम नॉलेज बाय एन इमिग्रेंट एजेंट और समवन और केस मैनेजर, ही इज़ अ केस मैनेजर, सो जब मैं ट्राई कर रही थी तो मैंने देखा कि यार ऐसा कोई था ही नहीं जो बिना पैसे लिए किसी को बताए कुछ कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है और यू हैव दिस चांसेस और नो। तो अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी है कि आप इस प्रोग्राम पे या वर्क परमिट पे ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, सिन आपका कितना देर एक्टिव रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आप अगर प्रोग्राम शिफ्ट कर रहे हो तो फिर उसमें कितने बीच में आप काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप सिन यूज करोगे नहीं करोगे, अगर आपका कोर्स फुल टाइम से पार्ट टाइम हो चुका है देन यू व्हाट चेंजेस विल कम इन अकॉर्डिंग विद योर सिन नंबर और योर वर्किंग कंडीशंस एज वेल। तो ये सब क्वेश्चंस आंसर करने के लिए आई हैव समवन व्हिच इज लाइक एंड केस मैनेजर, इमिग्रेंट केस मैनेजर है वो। सो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई इवन मैं उनकी ईमेल आपको इसमें मेंशन कर दूंगी, इफ यू वांट टू गो डायरेक्टली बुक अपॉइंटमेंट विद देम टू स्पीक विद देम, तो मैं वो कर दूंगी, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी ईमेल भी मेंशन कर दूंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई ऐसे इमीडिएट सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे एक्सप्लोर विद नर्स वाले इंस्टाग्राम के हैंडल पे मुझे कनेक्ट करो पहले तो, एंड देन आई विल आंसर यू एंड आंसर, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी विद गेटिंग अपॉइंटमेंट और एवरीथिंग। सो इट इज टोटली फ्री, इट्स नॉट एनी कॉस्ट, बट या इट इज फ्री फॉर वन सेशन। अगर आपको सेकेंड टाइम कोई भी बात करनी है या फिर कुछ भी काम करवाना है, सो यू दे हैव देयर ओन चार्जेस, सो आई थिंक, एंड विच इज वेरी मिनिमल। सो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी बात करनी है किसी भी टॉपिक पे रिगार्डिंग योर इमिग्रेशन स्टेटस, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई कैन happily facilitate you to another this case manager. So he is good working, he helped me with a lot of things, so I think yeah, and I can help you as well, so yeah, that's why not. So that's it, that is it for today's video. I think आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and I have included everything. कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक करे एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने आंसर करे हैं, so I hope आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं और फ्यूचर में भी कोई अभी ये वीडियो देखते देखते आपको कुछ क्वेश्चंस याद आ गए हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे वो कमेंट करके बताना। आई विल पिक नाउ फॉर द सेकंड वीडियो, अगर मेरे को बनानी है तो फिर मैं इसी क्वेश्चंस की इसी वीडियो के क्वेश्चंस कमेंट्स को उठा के वो क्वेश्चन Q&A बनाऊंगी। So if you have any questions query, just put below this comment in the comment section, and I hope you guys liked it, and yeah, I wish you all the best for your future endeavors, and I hope आपका दिन अच्छा जाए, and let's see you soon. And yes, if you want to connect with me, connect on my social media as well. I will keep posting some job links as well, and tell me where you are looking, in which terms you are looking. अगर आपको DSW, RSW इन सब के बारे में भी जानकारी लेनी है तो भी वो मैं सीरीज में एक सीरीज बनाने वाली हूँ जिसमें मैं इंक्लूड करूंगी। और अगर आपको इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछना है, सो आई विल keep on posting on my social stories, in my Instagram stories, so you can just check them out और जाओ, और I will put the direct link, तो आप जाके सीधा अप्लाई कर दीजिएगा। Okay, and thank you, have a nice day.